नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। और आज की शुरुआत करने से पहले यही कहेंगे दोस्तों कि नसीब जिनके ऊंचे होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इंपॉर्टेंट खबरों पे नजर डालते हैं। आज की हमारी पहली हेडलाइन है, पॉलिटिकल पार्टीज टेकिंग शॉर्टकट्स, बिगेस्ट एनिमीज ऑफ टैक्स पेयर्स पीएम। इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 3 और ये रिलेटेड है पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट आर द रीसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेटेड बाय पीएम इन नागपुर। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 75,000 crores in Maharashtra, and these projects include Mumbai Nagpur Highway, Nagpur Metro Phase 1 and AIIMS etc. Right. Our next important headline is 25% of POXCO cases are romantic relations. It is available on page number 11 और ये related है paper 2 Polity and Governance से। In this article we have to know about Protection of Children from Sexual Offences Act, objectives and recent study linked to it। तो दोस्तों, इसको हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है, लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अगर हम ओवरव्यू देखें कि अभी न्यूज में क्यों है, तो 1 in every 4 cases under the Protection of Children from Sexual Offences Act in West Bengal, Assam and Maharashtra constituted romantic cases, right? Our next important headline is Listen to the President. It is available on page number 12 और ये related है paper 2 Polity and Governance से। In this article we have to know about the issues associated with the presence of India, reasons for the current condition and what steps need to be taken in this context। तो friends, इससे related content भी हमारी वेबसाइट पे available है। लिंक यू नो कि कहाँ मिलेगा। उसके अलावा कुछ अच्छे पॉइंट्स यहाँ भी गिवन है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर हम ओवरव्यू देखें तो रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेज द इशू ऑफ प्लाइट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स होल्ड अप इन अ प्रेजेंस ऑफ इंडिया, particularly in Odisha and Jharkhand, and there is a need for holistic legislative reform that aims to expand the horizons of individual liberties, right? Our next important headline is unhealthy subsidies. It is available on page number 12 और ये related है paper 3 economy section से। In this article we have to know about use of fertilizers in India, fertilizer policy of India, issues and what lies ahead। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है एंड लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर हम ओवरव्यू देखें तो फॉर अ लॉन्ग टाइम India's fertilizer sector has been riddled with distortions from excessive use of urea, but now diammonium phosphate, also known as DAP, is seeing a similar phenomenon of over application due to underpricing, right? Our next important headline is an example and a warning. It is available on page number 13 और ये related paper to international grouping से। In this article we have to know what is the present status of inflation, GDP growth and fiscal deficit in G20 countries, issues and suggestions। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, राइट? अगर हम ओवरव्यू देखें तो as India takes over G20 presidency, one of the big job is to ensure that G20 nations come up with a credible policy framework to tame inflation, especially food inflation, while protecting growth and ensuring overall financial stability. And India needs to bring down its fiscal deficit, which is highest among G20 countries. Our next important headline is focus on commercial use of Navik, ISRO's future satellites to get additional frequency. It is available on page number 14 और ये related है paper 3 space section से। In this article we have to know what is navigation with Indian constellation and recent developments linked to it। तो दोस्तों, Indian Space Research Organization is introducing L1 frequency in all its future satellites with an aim to promote the civilian use of navigation with the Indian constellation, and Navik is a regional navigation satellite system developed by ISRO, right? Our next important headline is Center's Subsidy Bill. It is available on page number 15 और ये related to paper 3 economy section से। In this article we have to know how high Center's subsidy bill could go this year, what is the difference in 2022-23 and what will be the overall subsidy savings। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर्ड हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, राइट? Our next important headline is what is at stake in Turkey's new Syria escalation। It is available on page number 15 और ये related paper to international relations से। In this article we have to know about Turkey's stake in Syria, recent developments and Kurdish groups response and Syrian government stand and response of the world community and way ahead। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स लाइन बाय लाइन यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। Our next and last important headline is by NLA. It is available on page number 15 और ये miscellaneous section से related है। In this article we have to know about art biennales and why are they significant। So friends, it is an international large scale showcase of art that takes place every 2 years at a particular site
and they are usually non-commercial enterprises, and they help showcase art and often named after the host city, and they become a reason for local pride, promoting cultural tourism and generating revenue through visitors, right? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. Thanks for listening. For regular updates you can follow us on various social media platforms.